So we are starting with revision problems part 3, problem 56. Now the question is, in triangle ABC, sin square A plus sin square B equal to sin square C and AB equal to 10. By sine rule, sin square A is A square K square, B square K square equal to C square K square. So A square plus B square equal to C square implies it's a right angle triangle having angle C equal to 90. एंगल सी कैपिटल सी 90 है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू स्मॉल सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 10 इक्वल टू सी, ऑलराइट. ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. सी 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी. सो ए विल बी 10 साइन ए, बी विल बी 10 साइन बी. वी वांट टू फाइंड एरिया. फॉर्मूला फॉर एरिया, नॉर्मल फॉर्मूला इज हाफ बी सी साइन ए, बट वी कैन ऑल्सो यूज half AB sin C, क्योंकि we know angle C, alright. Sin 91 है तो ये 100 divided by 2, 50 times sin A into sin B, but sin B can be written as sin 90 minus A, which is cos A. What is A plus B? 90. A plus B 90, so B will become 90 minus A. We'll multiply and divide by 2, so this will become 25 sin 2A. We know maximum value of sine of any function is 1. So this sine 2a ka value becomes 1. So maximum area will be 25 square units is the answer. This was asked in 2017 paper. (57) alpha and beta are the roots of x square plus 5 mod x minus 6 equal to 0. This is x square can be written as mod x का square 5 mod x minus 6. यहाँ पे 1 है, 1 into minus 6 is minus 6. उसमें से plus 5 चाहिए तो plus 6 and minus 1 ऐड करेंगे तो plus 5. तो फैक्टर्स आएगा mod x plus 6 and mod x minus 1. Therefore, mod x equal to minus 6 or mod x equal to 1. But mod x cannot be minus 6. So mod x equal to 1 means x will become plus or minus 1. We are given since alpha and beta are the roots. Means alpha equal to 1 and beta equal to minus 1. We want modulus of tan inverse alpha minus tan inverse beta. That will be tan inverse of 1 minus tan inverse of minus 1 will be pi by 4 minus minus pi by 4 will become pi by 2. Pi by 2 is the answer. This was also asked in 2017 paper. The slopes of the lines equation is x square plus 2hxy plus 2y square equal to 0. So a will be 1, h will be h and b will be 2. We are given that slopes are in the ratio. So m1 is to m2 equal to 1 is to 2. Since m1 upon m2 is k, thus ratio of slope, one slope is k times the other. Therefore k will be half. Now we know the condition. 4kh square equal to ab times 1 plus k the whole square. 4 times k is half, h is h, a is 1, b is 2 and 1 plus half the whole square. So this 2 and 4 will cancel to give you 2. This 2 and 2 get cancelled. So h square will become 3 by 2 ka square, that is 9 by 4. So h will be plus or minus 3 upon 2. Value of h आएगा plus or minus 3 upon 2.
Now we are learning about three types of relation. Suppose any relation is such that AA or BB, CC, DD, then it is known as reflexive type of relation. If A is a set of numbers ABCD, set of elements ABCD, and if the relation R is such that it has AA, BB, CC, DD, it can have all more elements also, but these four elements should be there, then it is known as reflexive relation. Then symmetric. Suppose the relation R is such that it has AB, then it must also have BA. A कॉमा B होगा तो B कॉमा A भी होना चाहिए. A कॉमा C होगा तो C कॉमा A होना चाहिए. B कॉमा C होगा तो C कॉमा B भी होना चाहिए. Then it is known as symmetric type relation. A कॉमा B होगा तो B कॉमा A दोनों होना चाहिए. 1 3 होगा तो 3 1, 2 5 होगा तो 5 2, 7 9 होगा तो 9 7. एंड ट्रांजिटिव, अगर रिलेशन में एक एलिमेंट है A कॉमा B, दूसरा एलिमेंट है B कॉमा C, तो उसमें A कॉमा C भी होना चाहिए. देयर कैन बी अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. A B होगा और B C होगा तो A C भी होना चाहिए. यानी कि अगर B C एंड C D होगा, ऑलराइट, तो इसमें B कॉमा D भी होना चाहिए. B कॉमा C एंड C कॉमा D होगा तो B कॉमा D भी आएगा. दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट भी है, B तो B, C तो C, D तो D, दैट इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक मतलब A कॉमा B होगा तो B कॉमा A कॉमा C होगा तो C कॉमा A, वो भी होना चाहिए साथ में. देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव मतलब A कॉमा B, B कॉमा C तो A कॉमा C, B कॉमा C, C कॉमा D तो B कॉमा D, then it is known as transitive. Now 59. Set A is given as 3 6 9 12. We are given a relation and we have to define the relation. We have to define what type of relation it is. 3 3 6 6 9 9 12 12. All right. Then 6 12 3 9 3 12 and 3 6. So because it has 3 3 6 6 9 9 and 12 12, because it has these four elements 3 3 6 6 9 9 12 12, implies that it is reflexive. And because it has 3 6 6 12 and 3 12, 3 6 6 12 and 3 12 means it is transitive. So the answer is it is reflexive and transitive. Answer आएगा reflexive and transitive. Reflexive and transitive.
ये तीन फॉर्मूले याद रखेंगे. इंटीग्रल a टू b dx अपॉन रूट x माइनस a इंटू b माइनस x. जो पहला टर्म है दैट इज x माइनस लोअर लिमिट, x माइनस लोअर लिमिट, और दूसरा टर्म जो है दैट इज अपर लिमिट माइनस x. उसका आंसर अगर रूट डिनोमिनेटर में होगा तो आंसर आएगा पाई, न्यूमरेटर में होगा तो आंसर आएगा पाई टाइम्स b माइनस a द होल स्क्वायर अपॉन 8, प्रोवाइडेड b इज ग्रेटर देन a, दैट कंडीशन इज देयर फॉर ऑल. और न्यूमरेटर में x माइनस a और डिनोमिनेटर में b माइनस x होगा तो आंसर आएगा पाई टाइम्स b माइनस a अपॉन 2. So this will become question 60. From 5 to 7, root of x minus 5 into 7 minus x. This is here a equal to 5 and b equal to 7. A equal to 5 and b equal to 7. So the answer will be pi times b minus a the whole square upon 8, that is pi times 7 minus 5 the whole square upon 8. So this is 4 pi by 8, that is pi by 2. Pi by 2 is the answer. 61. Integral from 0 to 4 mod x minus 1. अब ये मॉड्यूलस के अंदर वाला नंबर को 0 बनाने का तो x का वैल्यू 1 मिलेगा. तो ये जो इंटरवल है 0 to 4 उसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 0 to 1 एंड 1 to 4. ये मॉड्यूलस के अंदर वाला जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट करने का तो 1 मिलेगा. तो ये इंटरवल 0 to 4 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. नाउ दिस इज here x lies between 0 and 1 and here it lies between 1 and 4. So यहाँ पे x is less than 1 और यहाँ पे x is greater than 1. जब less than 1 होगा तो mod x minus 1 का वैल्यू 1 minus x हो जाएगा एंड वैल्यू सेम रहेगा अगर greater than 1 होगा तो. If x is greater than 1 तो value remains same, and if x is less than 1 then value becomes negative. So this integral will become (0 to 1 minus x dx and 1 to 4 x minus 1 dx. This will be x minus x square by 2 from 0 to 1 and x square by 2 minus x from 1 to 4. This will be 1 minus 0, half of 1 minus 0, 1 by 2, 16 minus 1 and 4 minus 1. सब में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 minus 0 half as it is, 1 minus 0 half as it is, 16 minus 1 and 4 minus 1. So आएगा 1 minus half, 15 by 2 and minus 3. तो ये होगा 14 by 2. 15 by 2 minus half will be 14 by 2 minus 2. 7 minus 2. 5 is the answer. So we come to question 62. We have to find the function fx is x raised to x. We have to find it is increasing in what interval. Alright. So we know this x raised to x का हमको मालूम है डेरिवेटिव x raised to x into 1 plus log x. This is derivative synopsis. Now for increasing function
we know f dash x greater than 0, that is x raised to x into 1 plus log x greater than 0, that is 1 plus log x greater than 0, that is log x greater than minus 1, that is x greater than e raised to minus 1, that is x greater than 1 upon e. यहाँ पे what is the base? E. So log x to the base e greater than minus 1 means x must be greater than e raised to minus 1, converting from logarithmic to exponential. Answer आएगा x greater than 1 by e. 63. We have to solve the differential equation. dy by dx plus 1 is equal to cosec x plus y. So this is like cosec v. This is like cosec v. तो v को x plus y को v लिख देंगे, डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा 1 plus dy by dx is equal to dv by dx. Therefore differential equation becomes, क्या बन जाएगा, dv by dx is equal to cosec v. So dv upon cosec v is equal to dx. Therefore sin v dv equal to dx, that is dx minus sin v dv equal to 0. We integrate this, so integral dx minus integral sin v dv equal to c, that is x plus cos v equal to c, that is x plus cos x plus y equal to c is the answer. 64. Integral sin x with respect to cos x. अब जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू cos x को हम विथ रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx. ये d cos x को d by dx of cos x कर देंगे. दिस इज sin x इंटू minus sin x into with respect to x, that is minus will come out and 1 minus cos 2x upon 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, sin x into sin x sin square x हो जाएगा. We know sin square x का conversion is this, this is minus of, ये 1 by 2 बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा and half sin 2x plus c, that is sin half 1 by 4 sin 2x minus x by 2 plus c is the answer. Minus minus plus हो जाएगा, 1 by 4 sin 2x. This step is important. Problem easy है, सिर्फ ये first step strike होना चाहिए. We cannot इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू cos x, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू cos x को विथ रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx, देन रिमेनिंग पार्ट इज इजी. अगेन
लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट चाहिए टू एनी सर्कल, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये जो सर्कल का इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जहां x है वहां x कोऑर्डिनेट और y है वहां y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने का। तो रूट ऑफ S1 वी नो द पॉइंट x1, y1, दिस इज, अगर स्टैंडर्ड सर्कल होगा x square plus y square minus r square equal to 0, then your length of tangent will become again root of x1 square plus y1 square minus r square। जनरल सर्कल होगा तो जनरल सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करने का, स्टैंडर्ड सर्कल होगा तो स्टैंडर्ड सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस x by the x coordinate and y by the y coordinate। 65 point P is 5,1, that is your x1, y1, and circle equation is x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0। We want length of tangent, तो आएगा root of x1 square plus y1 square 6x1 minus 4y1 minus 3, that is x1 is 5, so 5 square 1 square, then 6 into 5 4 into 1 minus 3 will become root of 25 plus 1 plus 30 minus 7 will be root 49। आंसर आएगा 7। ये ऑल्टरनेटिव मेथड इसका ये रहेगा, what will be the center of this circle? -3, 2, and we can calculate the radius। रेडियस आएगा 9 plus 4 and 9 plus 4 plus 3, तो रेडियस r will be 4, और ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। we know this point, we know this point, so we can calculate length PC, this is t, so we know length CT, we know length PC, by Pythagoras theorem we can calculate length PT, that also is another method, but this is easier, alright। length of tangent segment चाहिए तो डायरेक्ट रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट x है वहां पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y है वहां पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड इज सर्कल के इक्वेशन पे से उसका सेंटर एंड रेडियस निकालो, आपको ये पॉइंट मालूम है, ये डिस्टेंस निकालो एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दिस distance we can get this distance, that is the alternative method। next, we are given this condition 2a plus 3b plus 6c equal to 0, we have to ax square plus bx plus c equal to 0, alright। वन रूट ऑफ लाइज इन, ऑलराइट। तो अभी इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन आएगा ax³ 3 bx² 2 प्लस cx प्लस d। ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाएंगे, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाएंगे fx। नाउ वी कैलकुलेट, अभी यहां पे अलग अलग इंटरवल्स दिया हुआ है ऑप्शंस में 0 1 1 2 2 3 एंड 1 3। सो वी फर्स्ट कैलकुलेट f0, क्या होगा f0? f0 विल बी
0 plus 0 plus 0 plus d, and what will be f1? a by 3 plus b by 2 plus c plus d. This will be d only. इधर LCM लो, नीचे 6 आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2a plus 3b plus 6c plus d. बट ये वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन इक्वेशन में, सो दिस विल बी 0 by 6 plus d, यानी कि f0 और f1 इक्वल हो गया. f0 इक्वल टू f1 हो गया. f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू d. सो what will be f dash x if you differentiate ax square plus bx plus c आएगा ना. इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो a 3x square and 3 cancels 2x. alright, so what will be, and this will have a root between ये f0 and f1 है ना. by Rolle's theorem it will have a root between 0 and 1. so answer आएगा it will have a root between 0 and 1. (67) इलिप्स का इक्वेशन दिया है x square by 144 y square by 25 equal to 1. that is a square is 144 and b square is 25. so what will be a square is square, a square minus b square, 144 minus 25, a square e square will be 119. so ae will be root 119. so focus will be ae comma 0, that is root 119 comma 0. now we want to find radius of circle having center. center है 0 comma root 2. center of circle is 0 comma root 2 and passing through center C is 0 comma root 2 and it is passing through the focus of the ellipse, that is root 119 comma 0. so this becomes the radius. radius will be length CS will be root of 119 minus 0 and 0 minus root 2. तो क्या आएगा? रूट ऑफ 119 प्लस 2 यानी कि रूट 121. 11 इज द आंसर. इलिप्स के इक्वेशन पे से उसका फोकस निकालेंगे. सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और यू आर गिवन दैट वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 comma root 2 and passing through the focus of the ellipse. so CS becomes your radius. Radius will be length CS. 11 is the answer. 68. We are given in triangle ABC A upon cos A equal to B upon cos B equal to C upon cos C. अब याद रखेंगे, whenever you are given A upon cos A equal to B upon cos B, that implies A upon cos A equal to B upon cos B implies it is an isosceles triangle, or B upon cos B equal to C upon cos C implies it is isosceles. And if you are given A upon cos A equal to B upon cos B equal to C upon cos C, then it is equilateral. The reason is this is
if you are given cos A upon A equal to cos B upon B equal to cos C upon C, that is similar to this. This is cos A upon K sin A equal to cos B upon K sin B equal to cos C upon K sin C. तो K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? cot A equal to cot B equal to cot C. That is A equal to B equal to C. That means it is equilateral triangle. Now in this particular problem we are given cos A upon A equal to cos B upon B equal to cos C upon C. This is given. That means triangle ABC is equilateral. And we are given the side A is 2. So what will be the area of triangle ABC? What is the formula for area of equilateral triangle? Root 3 by 4 into side square. That is root 3 by 4 into 2 square. Answer will be root 3. अभी ये याद रखेंगे. Whenever you are given A upon cos A equal to B upon cos B or cos A upon A equal to cos B upon B, then it becomes an isosceles triangle. And if you are given A upon cos A equal to B upon cos B equal to C upon cos C, then it is equilateral triangle. Or this, then also it is equilateral. So this is 68. 69. A bar cross I bar का square. This is magnitude of A bar cross I bar का square. This is magnitude of A bar square, magnitude of I bar square. What is sine of angle between? What is angle between A bar and I bar? Alpha. So this will be sine square alpha. A bar cross I bar square. Angle between A bar and I bar theta नहीं आएगा. A bar and I bar will be alpha. Similarly, what will be A bar cross J bar square? This will be 1. So it will be magnitude of A bar square into sine square beta, and A bar cross K bar square will be magnitude of A bar square into sine square gamma. So therefore A bar cross I bar square plus A bar cross J bar square plus A bar cross K bar square will be magnitude of A bar square कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. By synopsis we know the value of this is 2, तो आंसर आएगा twice magnitude of A bar square. Square of any vector is magnitude of vector the whole square. The formula for A bar cross B bar is magnitude of A bar, magnitude of B bar sin theta. Here angle between A bar and I bar theta नहीं आएगा, alpha आएगा. Alright. So this is magnitude of A bar, I bar का magnitude 1 है. So magnitude of A bar square sin square alpha. A bar cross J bar square will be magnitude of A bar square sin square beta, and A bar cross K bar square will be magnitude of A bar square sin square gamma. When you add all the three, magnitude of A bar square will come common, and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma का value 2 है. तो 2 is the answer. 70. Fx is mod x minus 2 plus mod x minus x plus 1 minus x. We want f dash minus 10. Here एक वैल्यू अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 आएगा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -1 आएगा. यानी कि इफ व्हाट इज दिस वैल्यू,
here x is minus 10, means x is less than minus 1. If x is less than minus 1, then mod x minus 2 will become minus of x minus 2 will be 2 minus x, and mod x plus 1 will become minus of x plus 1 will be minus x minus 1. So what will be fx? This will be 2 minus x minus x minus 1 minus x. So value of fx will become minus 3x plus 1. So from here what will be f dash x? Minus 3 into 1 plus 0 minus 3. So what will be f dash minus 10 also? Minus 3. ये mod x minus 2 का वैल्यू 2 minus x आएगा, mod x plus 1 का वैल्यू minus of x plus 1 आएगा, और x as it is रखेंगे. यहाँ पे ये x का वैल्यू 2 आएगा, इधर से minus 1 आएगा, लेकिन ये वैल्यू अंदर दिया है minus 10. So x का वैल्यू minus 10 है, minus 10 is obviously less than minus 1. So x is less than minus 1, less than minus 1. तो mod x minus 2 का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा. mod x minus 2 mod x minus 2 का वैल्यू x minus 2 आएगा if x greater than 2, and 2 minus x आएगा if x less than 2. अब ये less than 2 के लिए ही x less than 2 के लिए ही वैल्यू 2 minus x है. लेस देन 2 के बदले ये तो लेस देन माइनस 1 है, तो वैल्यू डेफिनेटली 2 माइनस एक्स ही आएगा, और इधर भी लेस देन माइनस 1 है तो नेगेटिव आएगा. ऑलराइट, दिस इज द आंसर 70. सम ऑफ n टर्म्स 71 वी वांट नाउ. We want sum of n terms of this series. We are given these options. I'll write the options. N cube into n minus 1, n square into 2n square minus 1, then n into 2n minus 1, and 2n raised to 4 plus 3n square. Now जब भी ये सीरीज का सम फाइंड करने वाला प्रॉब्लम आएगा तो वी डोंट एक्चुअली कैलकुलेट, तो बहुत लेंथी हो जाएगा. व्हाट वील डू इज पुट n इक्वल टू 1. सो वी गेट s1 विल बी 1 cube is 1. नाउ पुट n इक्वल टू 1 इन ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए का वैल्यू आएगा 0, ऑप्शन बी में आएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ऑप्शन सी में आएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ऑप्शन डी में आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5. मतलब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर 1 चाहिए, और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है. सो आंसर इज आइदर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. अभी ये कंफर्म करने के लिए पुट n इक्वल टू 2. तो क्या होगा? S2 आएगा सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, दैट इज 1 प्लस 27 28. तो आपका S2 का वैल्यू 28 आना चाहिए. अब ऑप्शन बी में सब्स्टिट्यूट करो n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी 4 8 माइनस 1, 4 इंटू 7, आंसर आएगा 28. सो
ये मैच हो रहा है 28। अब अगर ऑप्शन सी में चेक करो 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 3 तो 6, तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर। अगर बाई चांस ये ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई हुआ 2 डाल के, तो फिर 3 डाल के चेक करने का। यू टू कंटिन्यू दिस वे। कैलकुलेशन से करने जाएंगे तो बहुत लेंथी होगा। $72। 0 to pi x upon 1 plus sin x. This is 0 to pi x times 1 upon 1 plus sin x. This is f of sin x, and there is a synopsis given that 0 to pi x into f of sin x is pi by 2 times 0 to pi f of sin x. ये x into f of sin x में से अगर सिर्फ f of sin x चाहिए तो pi by 2 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो x चला जाएगा। So your integral I will be pi by 2 times 0 to pi f sin x is 1 upon 1 plus sin x. This will be pi by 2 times 0 to pi 1 minus sin x upon this we can calculate so integral I will be pi by 2 times sec square x का tan x आएगा माइनस sec x आएगा from 0 to pi value of tan 180 is 0, sec 180 is minus 1, tan 0 is 0 and sec 0 is 1. So pi by 2 times 2 cancel, okay, pi is the answer. We have to use this formula 0 to pi x into f of sin x is pi by 2 times 0 to pi f of sin x. तो ये f of sin x है तो इधर f of sin x आएगा, फिर उसको रैशनलाइज कर देने का, that becomes the answer. 73. We have to find the sum up to infinity. 1 plus 4 upon 5, 7 upon 5 square, 10 upon 5 cube, 13 upon 5 raised to 4 and so on. This is 1 into 1, 4 into 1 by 5, 7 into 1 upon 5 square, 10 into 1 upon 5 cube, 13 into 1 upon 5 raised to 4. And so on. Now, ये जो फर्स्ट टर्म जो है that is an AP. This 1, 4, 7, 10 and 13, that is an AP, and this 1 by 5, 1 by 5 square, 1 by 5 cube, 1 by 5 raised to 4, that is a GP. So 1, 4, 7, 10, 13 and so on. This is AP in which
A equal to 1 and D equal to 3. 4 minus 1 and 1 by 5, 1 upon 5 square, 1 upon 5 cube. This is a GP in which R equal to 1 by 5 upon 1, यानी के 1 by 5. Therefore, it becomes a AGP. Now, sum up to infinity of AGP is given by this formula. A upon formula is A upon 1 minus R plus dr upon 1 minus R the whole square. That is, sum up to infinity will be A is 1, 1 minus R is 1 by 5, D is 3, R is 1 by 5 upon 1 minus 1 by 5 ka square. This will be 1 upon 4 by 5 and 3 by 5 upon 4 by 5 ka square. This will be 5 by 4, 3 by 5 upon 16 by 25. This will be 5 by 4 plus 15 by 16. ये 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा. LCM लेंगे तो इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 by 16 इज द आंसर. जब कोई भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है दैट इज अ एपी एंड जो सेकेंड टर्म है दैट इज अ जीपी, देन दैट इज नोन एज एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें जो ए यूज करना है फॉर्मूला में दैट इज ऑफ एपी, डी इज ऑल्सो ऑफ एपी एंड आर इज ऑफ जीपी. That you have to substitute in this formula that gives you this answer. The formula for sum up to infinity is A upon 1 minus R plus D into R upon 1 minus R the whole square. This is for AGP. If it is a GP, then the sum up to infinity is only A upon 1 minus R. If it is only a GP, then sum up to infinity is A upon 1 minus R. But if it is AGP, then A upon 1 minus R plus dr upon 1 minus R the whole square is the answer. $74. If you want to find in what ratio is the line L whose equation is ax plus by plus c equal to 0 is dividing this segment AB. If the ratio is m is to n, then this formula gives you direct ratio. You don't have to calculate this. It is minus of ये point x1 y1 left hand side में substitute करने का equation के, that becomes the numerator, and x2 y2 substitute करने का, that becomes the denominator, and minus of that is the answer. So the line given is point A is minus 4,7, that is your x1 y1, and B is 6, minus 5, that is your x2 y2, and the line L is 2x plus 5y minus 7 equal to 0. So the value of this ratio will be minus of 2 into minus 4, 5 into 7, minus 7 divided by 2 into 6, ये x2 y2 इसमें substitute करने का, 5 into minus 5, minus 7, this will make it minus of minus 8 plus 35 minus 7 divided by 12 minus 25 minus 7
दिस विल बी -20 अपॉन -20, रेशियो आएगा 1:1, रेशियो आएगा 1:1. Other method is you assume the ratio as m:n, calculate these coordinates and substitute these coordinates in this equation to find the value of m:n. लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, you can use this formula directly. $75. We are forming a determinant. This is a problem based on probability. Determinant value. We are forming a determinant using element 0 and 1. So determinant D आएगा 0 और 1 here, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1. तो NS आएगा. This first element can be arranged in two ways. ये either 0 can come or 1 can come here. 0 or 1. So two ways, two ways, two ways, two ways. So number of ways will be 16. A is the event that value of D is positive. So there are three possibilities. Either 1 1 ही होना चाहिए, बाकी सब पॉसिबिलिटी में वैल्यू या तो 0 या तो नेगेटिव आएगा. These are the three possibilities. So your Na will be 3. So Pa will be Na upon Ns will be 3 upon 16. You can try all other possibilities. 0 0 1 1 आंसर आएगा -1. 0 1 0 0 0 1 0 1 आंसर आएगा 0. 0 0 0 0 आंसर आएगा 0. 1 1 1 1 आंसर आएगा 0. So all other possibilities, there are totally 16 possibilities. Alright? उसमें से 3 ही possibility ऐसा है जिसमें आंसर 1 आएगा, बाकी सब में आंसर या तो 0 या तो -1 आएगा. Alright? So we want positive value, therefore आंसर आएगा 3 upon 16. So these values are ruled out. आंसर आएगा 3/16. 76. We want sum of all 2-digit numbers. Means from 11 to 10 to 99. Alright, which leave a remainder five when divided by 7. So what is 10 divided by 7? 3. तो यहां पे रिमाइंडर 3 है. अगर 11 होगा तो रिमाइंडर 4 आएगा. So 12 होगा तो रिमाइंडर 5 आएगा. So the first number will be 5 and which divided by 7, तो common difference अभी 7 आएगा. So 19, 26 and so on. 12, 19. Next number will be 19. 19 divided by 7. Again remainder will be 5. 26 divided by 7. Remainder will be 5. Alright, and 96 आएगा लास्ट डिजिट. So we have to count the number of terms. This is an AP. A is 12, T is 7 and Tn is 96. So what is Tn? It is A plus n minus 1 times D. That is 96 is equal to 12 times n minus 1 into 7. 84 is
n minus 1 into 7. So 12 will become n minus 1. So n will be 13. So there are 13 such terms. So we want Sn. The formula for Sn is n by 2 a plus tn. That is 13 by 2. A is 12 and tn is 96. That is 13 by 2 times 108. आंसर आएगा 702. आंसर आएगा 702. 76. $77. Ellipse equation is 24x square plus 9y square minus 120x minus 90y plus 225 equal to 0. So we want to find the eccentricity. So we have to first check whether a is greater than b or a less than b. तो पहले इसको साथ में ले लेंगे, ये दोनों को और ये दोनों को. और now we take 24 कॉमन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x एंड 9 कॉमन ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 225. दिस इज 24 टाइम्स. ये 5 का आधा 5 by 2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 by 4, 9 टाइम्स. दिस विल बिकम, ये माइनस 225 एज इट इज रहेगा. दिस इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा और इधर 225 आएगा. सो इधर आएगा 150 प्लस 225. ये 5 का आधा 5 by 2, 5 by 2 का स्क्वायर 25 by 4, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25. इसको और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. और इधर 25 by 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड 24 कैंसिल होके 25 6 150 आएगा एंड 25 9 225. ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 24 टाइम्स x माइनस 5 by 2 का स्क्वायर and 9 times y minus 5 का square equal to 150. This is x minus 5 by 2 का square divided by so your a square will be 150 upon 24 and b square will be 150 upon 9. Obviously, therefore b greater than a type. Therefore e square will be b square minus a square upon b square. That is 150 by 9, 150 by 24 upon 150 by 9. This will make it 150 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. 1 by 9 minus 1 by 24 upon 1 by 9. This is 15 upon 24 times 9 divided by 1 by 9. So आएगा 15 by 24. So your value of E आएगा root of 15 by 24. आंसर आएगा root of 15 by 24. Eccentricity root 15 by 24. $78.
we want to find area of triangle ABC. This is say x1, y1, z1. B is 2, 5, minus 1. That is x2, y2, z2. And C is minus 1, 1, 2. That is x3, y3, z3. Now we want area of triangle ABC. This is half of modulus of determinant I bar, j bar, k bar, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. This is synopsis. If you want area of triangle whose vertices are x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, then it is given by this formula. अंदर का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ करने का. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that is the second row, and x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is the third row. तो क्या होगा? हाफ ऑफ determinant I, j, k, and 2 minus 1 will be 1, 5 minus 2, 3, minus 1 minus 3 minus 4, minus 1 minus 1 minus 2, 1 minus 2 minus 1 and minus 1. So this will be half of, क्या होगा I bar के साथ? minus 3 minus 4 minus 7, minus 3 minus 4 minus 7, j bar के साथ minus 1 minus 8 minus 9, and k bar के साथ minus 1 plus 6, that is 5. So it will be half of root of minus 7 का square, minus 9 का square and 5 का square. This will be 49 plus 81 plus 25, that is 1 by 2 times root 155 is the answer. अभी ये याद रखेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए 3 डायमेंशंस में, ऑलराइट, देन दिस इज द फॉर्मूला. 79. Zero to 2. अब इसको ये रूट के अंदर जो टर्म है उसको 0 से इक्वेट करेंगे. ये इंटरवल 0 to 2 है, उसमें x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, तो अभी इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. 0 to 1 and this will become here x is lying between 0 and 1, means x is less than 1. x less than 1 है तो x square भी less than 1 होगा, तो x square minus 1 less than 0 होगा. When a is less than 0, mod a का वैल्यू minus a आएगा. Here x is greater than 1, x more than 1 है तो x square also more than 1, x square minus 1 greater than 0. तो अभी क्या होगा वैल्यू? This will become 0 to 1, 1 minus x square
and 1 to 2, x square minus 1. This will become x minus x cube by 3 from 0 to 1 and x cube by 3 minus x from 1 to 2. तो क्या होगा? Integral I will be 1 minus 0, then 1 by 3, 1 minus 0, 1 by 3. 2 cube is 8, 8 minus 1 and 2 minus 1. ये आएगा 1, 1 by 3, 7 by 3 and 1. ये 1 और minus 1 cancel हो जाएगा. 6 by 3. 2 is the answer. इंटीग्रल I का वैल्यू आएगा 2. अगेन पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. 1 minus 0, 1 by 3 साइड पे 1 minus 0, 1 by 3 साइड पे 8 minus 1 and 2 minus 1. Question 80. In triangle ABC, A equal to 6 and B equal to 3 and cos A minus B equal to 4 upon 5, then area of triangle ABC. Look here. इसका यूज करने के लिए ये यूज करेंगे. tan a minus b by 2 will be sin a minus b by 2 upon cos a minus b by 2. This is what is the formula for 1 minus cos? 2 sin square a minus b by 2 and 1 plus cos is 2 cos square a plus b by 2, a minus b by 2 in fact. Alright, 1 माइनस कॉस करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर आएगा और 1 प्लस कॉस करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर. 2 and 2 गेट कैंसल्ड. रूट लेंगे तो ये आ जाएगा. अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं. 1 माइनस 4 by 5 and 1 plus 4 by 5. This will be root of 1 by 5 upon 9 by 5. वैल्यू आएगा 1 by 3. tan a minus b by 2. Now we know this formula. tan a minus b by 2 is a minus b upon a plus b into cot c by 2. Therefore, this is 1 by 3, 6 minus 3 upon 6 plus 3 times cot c by 2. So 1 by 3 equal to 1 by 3 times cot c by 2. So cot c by 2 will be 1. Means c by 2 will be pi by 4. So c will be pi by 2. Therefore, area of triangle ABC will be half of AB sin C. That is half of 6 into 3 into sin pi by 2 will be 1. Answer आएगा 9. Area of triangle आएगा 9. So students, in today's lecture we have completed some question up to 80. From 56 up to 80. We have solved questions of all different varieties today. Please keep on revising these problems, right? And please keep on working. We don't know when the lockdown is likely to get over, alright? And when the exam will be conducted is still not clear. Write each and every exam sincerely. Write each exam with full preparation, alright, and give equal weightage to physics chemistry and more weightage to maths, because physics chemistry is 50-50 marks and maths is 100 marks. So give more time to maths, that is but obvious. Alright, thank you. Keep on working hard. I'll be taking 2 more lectures wherein I'll be taking another 50 questions
25 in lecture 4, 25 in lecture 5. Thank you.